अंदर इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए? बैंगलोर में पैसा वैसा क्या फ्री में बांट टूट रहा है क्या? खोल ली जाए क्या अभी? हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू देसी फायर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रवि हांडा। इस चैनल पे हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बातें करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बातें करते हैं। अगर इन टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी सीरीज में आज मेरे साथ हैं शरद। वेलकम शरद। शरद मेरा एक काफी पुराना दोस्त है। शरद भी एक एडटेक कंपनी चलाता है। मैंने एडटेक के अंदर अब तो 15 साल के आसपास होने को आगे काम करते हुए। दैट्स हाउ वी फर्स्ट गॉट इन टच। तो जब मैं एडटेक कंपनी चला रहा था तब तक तो भाई साहब टी शर्ट चप्पल के अंदर घुमा करते थे इवेंट वगैरह में। अब भाई साहब बन गए हैं क्या वीसी पार्टनर। क्या वो व्हाट्स योर टेक्निकल पोजीशन राइट नाउ? फाउंडिंग पार्टनर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड वार्म अप वेंचर्स। सो दैट इज हिज करंट इंट्रोडक्शन। तो अब तो सूट बूट वाला आदमी हो गया है, पैसा वैसा वाला आदमी हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये जयपुर आया हुआ है तो एक एपिसोड इसके साथ में रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो वेलकम शरद, वेलकम टू द शो। थैंक यू आंड्रा भाई। काफी सारा सेटअप लगवा दिया आपने। काफी पैसा खर्च किया लग रहा है। अरे भाई बड़ा आदमी आ रहा है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। तो दैट बीइंग सेड आई थिंक बियर खोल ली जाए क्या अभी? खोल सकते हैं। गुड, आई जस्ट गेट अ बियर। तो जी इसलिए हमने सोचा इन एपिसोड्स को बियर पे बकर भी नाम दे सकते हैं। सो दैट्स द टाइटल दैट वी आर गोइंग विद। ओह वाओ, बियर पे बकर फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एपिसोड्स। फायर को चिल आउट करने के लिए। चीयर्स। तो शरद, बेस्ड अपॉन ऑल योर एक्सपीरियंस इन दिस, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए? Why should I even consider investing in startups? मैं उस डायरेक्शन में जाऊं ही क्यों? तो रवि, इसके आई थिंक फंडामेंटल रीजंस तो बहुत सारे हैं, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इम्पैक्टफुल रीजन जो बताऊंगा इसका वो ये है कि एक पर्सन, एक फाउंडर या एक ऑपरेटर अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 2, 3 ज्यादा से ज्यादा 4 इनोवेटिव चीजें कर सकता है, गेम चेंजर चीजें कर सकता है, या अपने ड्रीम्स को दे कैन मेक देम ट्रू। As a startup investor, you can be part of 100 plus dreams in your one lifespan, which you can be part of those journey. So that is the biggest reason I feel like if you support and if you invest into startups, that is there. इसके financial reasons भी हैं और आपके personal knowledge reasons भी हैं. Startups is a different asset class. ये diversification है. So one invest into gold, one invest into real estate, one invest into public markets, everything, and then one invest into startups. So that's the asset class which is slightly early in India. If you look at it, last India's first VC fund started coming in 2011 to 2014 times. US में this has started in 80s and 90s. So slightly newer asset class in India. But you would see the returns that some of the India's first fund when you look at the funds like India Push and or आपका 314 Capital or IB Cap. So the Indian origin funds, they have been able to deliver IRRs of 31, 35, 48, 45% in their fund 1 and fund 2. So if you compare it from Nifty 500 or Sensex 500, where their average returns would have been in a 3 years period 19-20%, they have been able to deliver 30+. So almost 10% of arbitrage you can see in the startup asset class. Second, younger generation is actually starting to invest into startups. The purpose is not only about the wealth, but also about the knowledge. So when you invest into a startup, you get to know a lot of information, a lot of knowledge, how the companies are building, how the companies are growing. So that is one big advantage. I recently met a guy in Bangalore. He is 23-year-old and he has invested in over 60 odd startups as an Indian investor. So बैंगलोर में पैसा वैसा क्या फ्री में बांट टूट रहा है क्या? 30 साल का लौंडा लोग 60 स्टार्टअप के अंदर पैसा डाल के बैठे, कितना क्या करोड़ कमाने वाला लौंडा है क्या? बंदे का ये कहना था कि उसने जो पहले स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, उससे कांटेक्ट लिया और वहां से उसको जॉब मिली। तो लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके एजुकेशन लेते हैं, फिर जॉब लेते हैं। उसने पहले स्टार्टअप को अप्रोच किया कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, क्या ये प्रॉब्लम है। दे अप्रोच्ड हिम, दे फिगर्ड आउट, आपका बाउंटी मिलने की जगह उसको जॉब मिल गई और उसने इन्वेस्ट किया।
वो हर अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है 50-60। आजकल प्लेटफॉर्म्स भी है ना, इफ यू लुक एट देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, तो उस वजह से भी so this is exceptional case. I do not advise someone at 22, 23-year-old just to be on record to do 60 odd investments. But जो knowledge capital जो मिलता है आपको, and I meet lot of my friends. Yesterday I met someone who is like in their 35s and running their own family business traditionally into industry manufacturing. But they want to diversify, they want to scale, and when they see how the technology companies are being built, how the fintech companies are being built, how the lending business is emerging with new data, तो वो जो knowledge मिलती है, how you can apply in your own businesses or your own ventures, that is also the another capital which is unaccounted. So several reasons from your dreams becoming true to actually the impact that you're supporting the early stage startups and creating more entrepreneur, but also making real justification in terms of financial returns if you compare with the public office. Fair. तो एक पॉइंट हो गया अपना रिटर्न्स का कि सुपीरियर रहते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया अपना इम्पैक्ट का एंड लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर फैक्टर्स हो गए, तीसरा पॉइंट हो गया डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत तुमसे और बेसिक समझना चाहूंगा कि अब रियल एस्टेट का मार्केट कैसे करता है, उसका स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत लेना देना है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक मार्केट 20% गिरा तो रियल एस्टेट भी 20% गिरा, तो मैं उन दोनों में पैसे लगा के रखता हूं तो मेरे एसेट्स जो है वो डाइवर्सिफाई होते हैं। सिमिलरली विद गोल्ड, कि गोल्ड भी जो है वो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, गोल्ड का अपना अलग थोड़ा सा चलता है। बॉन्ड्स वगैरह हैं वो मोरलेस ऊपर ही जाते हैं, इक्विटी मार्केट जैसे शफल नहीं करते हैं। ये एसेट क्लासेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मेरे को समझ में आता है कि ये लोग स्टॉक मार्केट से इनका कुछ लेना देना नहीं है। बट स्टार्टअप्स के अंदर जब मैं पैसा डाल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे मैं इक्विटी ही खरीद रहा हूं उनकी, तो इसको एक अलग एसेट क्लास के जैसे देख के उस हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दैट वुड बी वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि अच्छा मैं लार्ज कैप के अंदर जो है इतना परसेंट डालता हूं, मिड कैप में इतना डालता हूं, स्मॉल कैप में इतना डालता हूं, और स्टार्टअप्स के अंदर मैं इतना परसेंटेज डाल देता हूं। तो what sort of diversification should I look at it as an asset class? Should I look at it as a separate asset class in itself? या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और उसके साथ में एक छोटा स्टार्टअप कैप मैंने और बना के डाल दिया, कौन सा टाइप का डाइवर्सिफिकेशन है? So when I meet with the ultra HNIs or people who have already let's say 50 crores plus kind of an exposure into markets or different investments, I tell them to invest and look at it like a mid cap, large caps, small cap, and then also expand towards startups. कि if you have a lesser limited exposure towards small cap, instead of small cap you can also do that, or beyond that you can expand that. But when you look at someone with an overall investment of 5 to 10 crores rupees of net worth, that is the area where I see कि you should look at startups as an entirely different asset class, because markets are again linked with a lot of things, interest rates, how the liquidity is coming, how the foreign markets are behaving. Here there are game-changing companies. These are companies which are being built on technology, where there is an exponential impact that can come, which is not entirely dependent on the markets. Their next round of VC investing is dependent on the market. When the exit comes, is it coming in third year or is it coming in 5 year? Is dependent on the market. But what kind of business it can become? It can become a 1000x business. This is dependent on the overall customer segment on the market. So it is not on the trade market, but it is on the real market. How the customer journey is having, how the technology is emerging, how the adoption is happening. So India has a lot of problems which are still unsolved compared to Western world. So those problems are yet to be solved, even if the market doesn't. So let's say if you look at EdTech, education technology, we both are big into education technology. If you look at if you ask a VC that EdTech, how is the market? They'll say no, not a great market. But you ask a EdTech founder and then how's the market? The best time market. Government is spending most into education. Consumer is spending most in the education. Ask about travel. No VC is investing, or very few VCs are investing into travel. But ask about a travel founder. This is the best time of the market. So as a younger investor, as a smaller investor, one should look at startup as a different asset class, because businesses are being built exponentially and massive businesses are being built in the next 10 years. Fair. So तुमने बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टर्स की बात करी। एक तो हो गए मान ले जो 5 से 10, 15, 20 वाले हैं, और एक हो गए जो कि 50, 10 वाले हैं।
पहली बात तो यार ये 50+ वाले लोग तुमसे मिलते नहीं है कि भाई तुम क्या ऐसा होगा, मतलब वो 5-10 वालों में तो हम आऊंगा, ये 50 वाले लोग तुम उनसे कैसे, हाउ आर यू टैपिंग देम, हाउ आर यू रीचिंग टू देम, व्हाई आर दे इवन मीटिंग योर व्हाट 35-year-old guy who was 30 back 35 so you are early 30s कर देते, चलो you are an early 30s guy and this is your first fund that you have launched, warm up ventures वाला. तो how are you even approaching these guys जो देख, आई एम श्योर कुछ जो है तुम्हारे नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे जिनको तुम डायरेक्टली जानता है, दैट आई अंडरस्टैंड कि जिसको तुम डायरेक्टली जानता है वो तो तुमसे बात कर लेगा. बट इफ यू डू नॉट नो अ पर्सन एंड यू डू नो दैट ही हैज 50 crore plus in investable surplus and he is the guy that you are targeting, A, how do you approach someone of that financial stature? And B, what is the typical response that you haven't gotten from these sort of people about the startup investing? So, I mean, if I tell you about warm-up, in warm-up we have just recently closed our first fund. And actually we closed a targeted corpus in like just 2 months. So, which was mostly from friends and network of friends. So, in May 2023 we decided that okay, we want to create a new fund. And there in like, we thought okay, 10 crore का fund बनाते हैं, 15-20 में invest करेंगे and then we will go for bigger and outside investors. But when we started raising that 10 crores, we just closed that in 2 months. And then we decided that some more interest was coming in and then we eventually extended it to about 20 crores kind of a fund. So Bloom is running their first current fund at about 2,000 crore plus. When they came up with their first fund, that was 25 crore fund. I have a lot of stories where first fund came up as 10 crores and even 5 crores kind of first fund. And the fund managers are running about 1,000 crore fund, which is their third fund. So that is how it is happening. So when you look at since we have our own operator background, we have been running our own startups. So हमारे relations हमारे angel investors से थे. And technically I got to exit one of my angel investor almost 5 times. So I had that relationship into different communities also. तो मेरे लिए हमारे लिए फर्स्ट फंड क्लोज करना वाज इजियर फ्रॉम अ क्लोजर नेटवर्क. अब उनके पास जब आप जाते हो तो आपको बस अपना ये दिखाना है कि व्हाट इज द थीसिस. एज अ फंड मैनेजर यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ एज दैट हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फंड्स. Up there are 2 types of investor. One, that they are first time LP in a fund. LP means limited partner or investor in the fund. So they are first time investor. They invest you that because they know you and they trust you. That's why they're investing in you. Second time, third time होते हैं तो उनको we have to justify that okay, what is the different approach we are following, right? So if I take you the experience of like the who invested in my first fund, those 50 crore net worth plus. To be honest, very honest, I mean they are all from the networks and references that they're coming up, and they know that these guys have knowledge, more knowledge than a finance person than actually having their own startup. So they will have a better judgment of startups and founders and industries. So that is the positioning ourselves. So India has like about 10% of the funds which are run by operators or actually founders, and in US if you look at it, founders led fund are about 50% because Indian cycle is new. India's first startup started to come in 2010, 2007. So they were just coming out of it and then starting fund. In US, again, as I mentioned, it has been a time. So India में first time founder funds are just coming in and all investors are looking at, okay, their judgment is any day going to be better than in the early stage investing. In growth stage investing, later stage investing is different. अब मैं अब second fund, we are planning a second fund 1 year down the line, which could be, let's say, 100 to 200 crore kind of a plane. We're still so we are figuring it out, and उसके लिए we will need to reach out to the new investors. In इस तरह के अल्ट्रा ऐसे बच जाएंगे. तो वहाँ we have to define our own clear thesis. So our thesis is about this stage, that what stage we enter, what kind of founders we want to invest, what kind of returns we are expecting from each company. And then, so let's say warm-up, we do sector agnostic investing in the first fund, and even second fund we are going to be sector agnostic. We really propose the investors that okay, someone who is investing new into the startups or first time LP or second time LP, we suggest them that okay, go for an agnostic fund. जब आप agnostic fund में जाते हो तो you get to know a lot of knowledge about different sectors. And that knowledge helps you in your own portfolio also and your other investments also, which you're doing in different sectors. Someone who is doing their third investment, fourth investment into a fund, they prefer to go for a sector-focused fund. That has been the trend that we've seen. ये जो तुम्हारा वार्म अप वेंचर्स का फंड 1 है, फंड 2 जब होगा तब की तब बात करेंगे. इसका
लीगल स्टैंडिंग क्या है? इज इट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ सेबी का रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है या एलएलपी है? हाउ डज इट वर्क? व्हाट्स द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर सपोज आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस? क्या प्रोसेस रहेगा? Very interesting question. So I mean, I and my partner in warm-up, Rajan, we have been figuring or thinking about coming up with fund for more than about 1.5 years. And so SEBI has this structure of category 1, category 2, category 3 in alternative investment funds. So category 1, so these are all for investing into startups or different asset class. Category 1 is purely into startups. Category 2 is startups and public listed companies as well. So when we were thinking of coming up with our first fund, we decided that okay, there is a lot of compliance, cost, and efforts involved. And what we do is we run a syndicate, which is an advanced pool syndicate on a SEBI registered category 1 angel fund. So basically, let's say if Ravi comes as an investor, we have a partnership with another licensed fund. Your money goes in the trust's account of that licensed fund. We have kind of a partnership with the fund that okay, the investors we will attract, and their investment into which companies is going to be happen will be shortlisted by us, and that will be all private and exclusive. So we are using a vehicle which is a SEBI registered category 1 angel fund. So all things are regulated. Every investor gets their units, and soon they will be dematerialized as well. So that is the current status. When you go for a 100 crore plus fund, that is something when we are planning to come up with our own license of category 1 or category 2 fund. Okay. सपोज मेरे को ये लाइसेंस चेक करना है कि तुम सही बोल रहा है या फट्टा मार रहा है. हाउ डू आई गो एंड चेक दैट? नॉट जस्ट फॉर योर फंड, फॉर एनी फंड. मेरे को ये चेक करना हो कि ये कितना ऑथेंटिक है या नहीं है. हाउ डू आई चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन एंजल फंड और अ वेंचर फंड और समथिंग लाइक दैट? So you can go to the SEBI's website. You can all find the list of different AIFs which are registered in India. You can all find that. Now you will not find warm-up ventures there because we don't have a license. But when we share a document with you, we tell that okay, this is the fund that we're using. Those fund details you can share. Once you're coming as an investor on board on the fund, so the agreement that you will be signing with that fund only. There is no agreement happening with warm-up. Your agreement is happening with the SEBI registered fund, and those details are available on SEBI's portal. So they're available on the SEBI's portal. Yes. Are they also available on your portal, Warm Up Ventures website? That this is the fund that we are going with. Not on the website currently, but whenever we share that information with the investors, whomsoever are interested to invest. अच्छा, सबको क्यों बताया जाए कि क्या कहानी चल रही है? तुम पैसा डालने में इंटरेस्टेड है, सीरियस आदमी है तो बात कर. वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है, हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है हमारी वेबसाइट पे किसी स्टार्टअप को, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इज देयर. तो फाउंडर को पता चलना चाहिए कि वार्म अप वेंचर इज द राइट इन्वेस्टर और नॉट फॉर देम, एंड इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए किस तरह के इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं यहाँ पे. बट व्हेन यू गो इनटू ग्रैनुलर डिटेल्स, फाउंडर में भी जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी कैप टेबल पे वही फंड जाता है, लाइसेंस्ड फंड. अंडरस्टैंड. एंड इन्वेस्टर के भी यूनिट्स उसी फंड के पे. तो एक बात बता, आज की डेट में अगर मैं तुझसे पूछूं एज अ वीसी, एज अ फंड मैनेजर, तेरा कस्टमर कौन है? चला तुम धंधा रहा है तो तेरा कोई ना कोई तो कस्टमर है. तेरा कस्टमर ये फाउंडर लोग है, कस्टमर तो इन्वेस्टर ही है जिनको पैसा बांटना है, या तेरा कस्टमर ये इन्वेस्टर लोग है जिनसे तुमको पैसा? मेरे कस्टमर इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज वी चार्ज फीस फ्रॉम इन्वेस्टर्स, the management fees and carry both a charge from the investors. Startups are like a supply to you because that is something we are doing. So we are into services business. We are managing the wealth of our LPs or our investors to make better decisions in that which companies we want to invest in. हमारे कस्टमर तो इन्वेस्टर ही, तुम पैसा वही दे रहा. बिल्कुल. हम भी सेल्स करने जाते हैं जब हम इन्वेस्टर से बात करते हैं कि हाँ, this is why you should invest into warm-up. This is why you should trust warm-up. What's the average check size which comes to your fund, and what is the minimum check size that you have taken? So in our fund one, the average check size is 50 lakhs. And minimum is 25 lakhs because we are using category 1 angel fund. So SEBI's requirement is minimum 25 lakh rupees of investment. That is something we are taking. And a lot of like 50% of our investors are their own startup founders. So mostly startup founders, we all know they don't have much liquidity or much of kind of liquid wealth. So we have taken smaller checks, but they add much more value beyond the capital that they're investing. But mostly from HNIs, we have taken checks of 1 crore, 2 crores, those kind of checks that we have taken. अच्छा, so legal requirement 25 की, typical average अगर देखोगे तो 50 के आसपास है.
और तुमने कुछ लोगों से एक दो भी इस फंड में ये है, बट द मोमेंट आई बिकम और लाइसेंस मेड माय ओन वीसी फंड व्हिच इज नॉट इंडिया फंड, वीसी फंड, देयर द मिनिमम सेविंग रिक्वायरमेंट इज 1 करोड़ रुपए ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, तो बेसिकली अगर तुम लोगों के पास में करोड़ नहीं है तो एक काम करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और अभी चले जाओ, आगे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है नहीं, बड़ा लेवल का गेम का बात हो रहा है. Which brings me to my next question. I have seen platforms, I have seen angel funds, वो लोग 20,000 रुपया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो या 2 लाख रुपया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, ये सारे ऑप्शंस भी लेके आते रहते हैं. नाउ if I ask you, and you have enough experience both as a founder, as an angel investor, and now as someone running a fund, what sort of a person should even be looking at, investing in a venture fund? And I'm asking this from 2 aspects. A, कि उसके पास में कितना पैसा होना चाहिए. भाई यार मान लो तुम्हारे पास 25 लाख रुपए आए तो तुम 25 तो इसमें डाल दें. करेक्ट. And B, what portion of your money should you direct towards startups as an investment? So typically someone, let's say I'll divide this again just like how I answered the previous question. I would answer it from the age group. Like if you're in your if you're in your 20s, I would suggest that you can, if you're earning about, if you have net wealth of about 2 crores, you can go up to 20-25% of your wealth going into startups or investments going into a startup. If you're investing 50 lakhs rupees, or if you're investing, let's say 40 lakhs rupees per annum, you can invest up to 10 lakhs rupees into startups. In that category, you can take that risk. If you're into later stages of investments, when you will need more liquid money, you can come up with the liabilities and requirements of the money. You cannot invest a lot into illiquid funds. Then if you're having a net wealth of about 2 crores, then you can say 5 to 10% of the investment should go into the startups. Now, 2 crores onwards, you can think that, okay, you can have exposure into startups, but I would not advise someone who is investing 10 lakhs rupees overall in the year to invest into startups. At this point of time, there are platforms, but not a great strategy because investing is a lot of longer game. I mean, you have to have a portfolio approach. 20 companies you will invest, maybe 1 or 2 will work. And if you have very limited capital to invest, you will end up investing only in 3-4 companies. And if they don't work out, everything is going to be not working out. So one should be able to have a portfolio approach. And ideally, in the early years, you can take 20-25% kind of a risk. In the later years, I would suggest 5-10% in the better range. Okay. So, correct me if I'm wrong. So, let's say if you are young, less than 30 wali category mein ho, and you are investing 50 lakhs a year total, तो उसमें से 10-15 लाख तुम startups के अंदर डाल सकते हो. On the other hand, let's say if you are someone who is later in the career, then maybe in percentage terms you need to reduce it a little bit because it's not really a very liquid investment. Fair. Liquidity इसके अंदर यार कैसे आती है? मान लो मैंने तुम्हारे फंड के अंदर 25 लाख रुपया डाल दिया. अब मेरे को अगले साल जो है 5 लाख रुपए की जरूरत है. क्या मैं 5 लाख रुपया निकाल सकता हूँ? नहीं. क्या इसका साइकिल रहेगा? अच्छा, 25 लाख रुपया तो मुझसे डे 1 पे ले लेगा? नहीं. सो मोस्ट फंड्स हैव अ ड्रॉडाउन साइकिल. तो अगर किसी ने 25 लाख रुपए डाले तो आपके ड्रॉडाउन साइकिल हो सकते हैं. देयर कुड बी 2 ड्रॉडाउन्स, 5 ड्रॉडाउन, 6 ड्रॉडाउन. ड्रॉडाउन मींस इंस्टॉलमेंट्स. कि अगर आपने 25 लाख रुपए डालने हैं और मैं भी 25 लाख रुपए डे 1 में तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं किसी भी कंपनी के अंदर. सो लेट्स से आई प्लान टू इन्वेस्ट इनटू 5 कंपनी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. तो मैं उस इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर लेता हूँ 6 मंथ्स में. सम फंड डू इट ऑन एनुअल बेसिस, सम फंड डू इट ऑन द डीप टू डीप बेसिस आल्सो. When there are larger checks, let's say if you have 5 crore investment, I'm doing only 5 investments in a year, then I might ask at a deal by deal basis also. We are slightly a more frequent investor. We will do 12 to 15 investment in a year. So we ask at a half yearly level. So अगर आप 25 लाख डालते हो तो ऑलमोस्ट हर साल हर 6 महीने में मैं आपका 20% 5 लाख रुपए आपका लेता रहूंगा. दैट इज द वार्म अप्स. अच्छा, तो वार्म अप के अंदर 25 लाख मेरे को एक दिन में नहीं देना होगा. मेरे को तकरीबन 2.5 साल के आसपास 2-2.5 साल लगेगा वो पूरा ऐसा डिप्लॉय. So very flexible even. हाँ, तो मैं मतलब डाल ही 5 लाख रुपया रहूंगा हर 6 महीने. That's why I'm saying 10 lakhs में अगर आपको साल में लगाना है तो you can do that through a fund like us. So अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है रवि कि जब आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाते हो, मोस्ट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाओगे तो 2-3 लाख रुपए का अपना मिनिमम चेक साइज होता है टू एंटर. एंड अगर आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग इन नॉट मोर देन 3 कंपनीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स.
while if you become part of a fund, we are taking about 10 to 15 investments in a year. So even with a smaller check, your smaller amount is going into each fund. So that is the kind of advantage happens is now once you have a portfolio of 20 companies, now in the 20 companies portfolio, you will be able to have a diversification, right? So I'm slightly making the riskiest component of startup investing slightly more organized and slightly more portfolio approach, which is also managed by us later on. So all these founders are supported by us. So you are just investing in that, get taking out of it. And even if out of 20, 10 days do not work out, you will have decent returns coming out of it. Fair. तो अगर मैं मान लो इंडिविजुअली करता हूँ तो पहली बात तो ऑल द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डन एज एन एंजल इन्वेस्टर, मुझसे तो कोई 2 लाख रुपया भी नहीं लिया था. 5-10 25 मांगता है. अगर मैं इंडिविजुअल कंपनी से जाके बात करता हूँ तो टिपिकली आई बीन आस्क्ड फॉर 20-25 lakhs. वो मतलब पागल हो गया क्या? जितना अमीर आदमी होता है उस वक्त ज्यादा मांगे जाते हैं. नहीं तो पागल हो गया क्या? तो फिर मैं यार दोस्त को बोलता हूँ कि भाई तू देख ले, कुछ कर ले. तो बोलता है अच्छा हांडा तुम अपना आदमी है तो हम चल तुझसे 5 ले लेता हूँ. ऐसे ही बोल के उन्होंने मुझसे 5 लिया भी है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले. आई डोंट रियली नीड दैट मनी बैक. बट the reason why, and I have invested in a venture fund as well. तो ये डाइवर्सिफिकेशन वाला एंगल मेरे को समझ में आता है कि भाई खुद की 5 कंपनी की जगह 20 कंपनी के अंदर पैसा जाएगा. बट उस सब के लिए तुम भैया फीस भी तो बहुत ले लेता है. तुम्हारा मैनेजमेंट फीस रहता है, फिर हर्डल रहता है, फिर कैरी रहता है. कैरी के अंदर भी हाफ कैचअप रहेगा, फुल कैचअप रहेगा. ये सारी टर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो let us have a crash course in startup investing terms from our friend Sharad. I will ask you the terms, you explain what they are and what are they for your fund. Let's begin. What is management fee? So management fees is the fees that we are taking on an annual basis to manage the capital that you are deploying in the fund. So let's say if you are investing in 1 crore rupees over the next, and the deployment is happening in the next 2 to 3 years, but the funds will be managed for another 5 to 7 years. So management fees is something that the fund charges at their fees to manage that money. Now this is slightly higher compared to the public markets, and usually the typical VC structure is 2% per annum. Now some VCs would charge you for 7 years, some will charge you for 10 years. We charge it for 5 years. That okay, we are charging for 5 years, and after 5 years, if we have to manage, that we will do it free of cost. So overall, if your 100 rupees are being invested, 10 rupees plus GST is going into management fees. Your 90 rupees. GST भी लेगा तुम? सरकार ले रही है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ. अरे यार भैया इन्वेस्टिंग के अंदर भी तुम जो है फीस पे GST ले लो, वो ठीक है, रूल है तो. So 2% is your management fee. एक तो मैनेजमेंट फी कमा ली तुम लोगों ने. उसके बाद में अब तुम परफॉर्मेंस बोनस भी लेते हो. I think that performance bonus is known as carry in these cases. Yes. Carry क्या होता है, कितना लेते हो, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है? So basically कोई भी VC fund management fees is not their income. Management fees is their operations cost. Or maybe most of the VC fund partners working at very reduced salary structures, and their teams are hired that way. How VC funds make money is based on the carry, which is profit share. So if I make money for you, then I make money. So if my investors make money, then the partner of a VC fund will make money. So carry structure means, let's say if your 100 rupees, I make that 500 rupees in next 5 years. So profit is 400 rupees, and in that 400 rupees, a percentage of that money is charged as a fees by the VC fund, which is called carry, which is again typically in the VC structure that is around 20%. So वो जो 400 रुपए आपके बने प्रॉफिट में, उन 400 रुपए का 20% जो हो गया आपका 80 rupees, that will be the profit of the VC fund, and 320 rupees will be going to the 100 principal plus 320 rupees will be going back to the investors. That is carry. तुम 100 का 500 कर दे भाई तो ले ले तुम 80. Exactly, that's the point. कोई दिक्कत नहीं है 80 रुपया देने में. अगर तुम 100 का 500 कर रहा है तो दिक्कत आती है. तुम करेगा 100 का 150 और 150 में से 40 रुपया अगर तुम लेके बैठ जाता है. यहाँ आता है हर्डल रेट. तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड हर्डल रेट. हर्डल रेट मतलब है कि एटलीस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 10% किसी फंड का हर्डल रेट है, तो जब तक 10% IRR नहीं हो जाता तब तक VC फंड कोई कैरी नहीं लेता है, तो वो कोई प्रॉफिट नहीं लेगा. तो जैसे अगर आप FD की रेट मानोगे, FD की रेट आपको 7-8% टाइप्स आती है, तो 7-8% अगर VC कोई भी इन्वेस्टर FD में लगा के कमा लेता तो वो आपको क्यों फीस देगा?
So hurdle rates easy funds decide करते हैं कि let's say some people will do it at 5%, some will keep it 0, some will keep it at 12% also. But till that internal rate of return, till that IRR, VCs कोई भी carry charge नहीं करते हैं. अब वो उससे ज़्यादा returns जब बनाएंगे आप तब वो अपना carry charge करते हैं. अच्छा हाँ, तो मतलब एक बेस तुमने सेट कर दिया कि भैया इतना पैसा बना तो मैं तुमको परफॉर्मेंस का पैसा नहीं दूंगा. करेक्ट. हर्डल रेट के ऊपर अगर तुम कमाएगा तभी तुमको जितना पैसा आप फ्री में बना सकते थे उस पर हम कैसे फीस ले सकते हैं. बट अगर नहीं, तुम बहुत कमीने लोग होते हैं भैया वीसी वाले कहीं भी कुछ भी फीस चार्ज कर सकते हैं. कैसे ले सकते हैं तो इसका तो कोई भी ईमान धर्म नहीं है. मतलब आई कैन नॉट टेक नेम्स ऑफ सम ऑफ द फंड्स व्हिच आर देयर जो कि बड़े बड़े पेड़ों के नाम के ऊपर लगे हुए हैं. दैट शुड बी इनफ. और फीस उनकी क्या रहती है वो तो रहती ही है. सो तुम्हारे फंड के अंदर मैनेजमेंट फी कितना है, कैरी कितना है, हर्डल कितना है? सो हमारे फंड में 2% per annum मैनेजमेंट फीस है which is charged for 5 years. So 10% is management fees, carry is 20% again of the profits, and 7% is the hurdle. Usually in the early stage funds or seed stage funds, carry is kept 0 to 5% or 10%. Usually in later stage funds when there is a lesser risk, lesser return, the carry is up to 12%, which is like S&P 500 kind of return from the market. अच्छा, तो ये हर फंड की अलग होती है क्या? मतलब बिकॉज यू नो द फंड दैट आई इन्वेस्टेड इन benchmark is 220. So 2% per annum management fees, 20% carry. Adults might vary for different funds. हाँ, I think I've heard this 220 term or a 220 phrase before a few times. Yes. तो चल अब मेरे को समझ में आ गया कि भाई तुम्हारे फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स वगैरह रहती हैं. मैं चेक लेके जा रहा हूँ. चेक का बेटा अभी तुमको गलियाएंगे, रुको आने दो. वी नीड दैट. सो बट कोई यार नहीं है, उसने मन बना लिया, ही इज कन्विंस कि मुझे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड लेट अस अज्यूम दैट ही मीट्स योर अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. उसकी नेटवर्थ जो है वो सपोज 3 करोड़ उसकी नेटवर्थ है, वो हर साल जो है 50 लाख रुपया बचा रहा है और 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो भी उसको डालना है, he can afford to invest that. Right. How does one go about startup investing in today's world? क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन प्रिफर्ड है, कौन सा ऑप्शन खराब है? If you can just tell us about the investing space in startups that exist today. Right. So as an individual investors, there are 2 ways of doing it. One is as an angel investors, directly writing small checks when you are deciding कि इस कंपनी में मुझे करना है या नहीं करना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. That is one way of doing it. Another is that you engage with a fund like warm up and then you invest के मुझे अगले 2 साल में 3 साल में ये 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है. You decide where to invest. So there are 2 ways of doing it. If you want to do it directly, there are several angel platforms available currently. Like there is a global platform called AngelList. In India also there are platforms like India Angel Network, Mumbai Angels, Let's Venture, आपका V Founder Circle, Venture Catalyst. So there are several platforms where you can be a member. Some of them have a onboarding fees, some of them are free, so you can be a member, and they keep bringing some deals, and you can decide. Here the important piece is that there is no accountability of the platform that which deal is to be invested. That is your choice that which sector you feel to be invested or not. That is one way of doing it. Typically, these platforms will also have some 2 to 3% of transaction fees. Sometimes the lead investor will have a 0 to 10% of kind of carry, and they will also be having like these are typical fees. And you again, most of these angel networks have started using their own AIFs. So on the company's cap table, single entry will be there, but you will have units of your investment. And typically minimum investment is about 3 lakh rupees on standard platform. Some will have 5, some will have 10. Typically 3 lakhs is what you will look at it. Second way of doing it is on the fund. So when you feel like, okay, I do not have enough data or enough time to choose that which company to invest in, where to invest in, that is where you start working with a fund. That okay, I want to invest 1 crore rupees in next 3 years. You take that money whenever you want, you can draw it down, and then you decide that where all to invest. I believe in you. I'm expecting a certain % of an IRR. That is what I will get, and I also want the knowledge alongside that IRR. So typically, if you work with a very established large VC funds, there you might not be having the access to the knowledge that is being there. But you will definitely get quarterly updates, financial updates. But working with a smaller fund will give you an access that you can directly talk to the partners. You can have a lot of knowledge, what is working, what is not working, why you are deciding, why you are not deciding.
Of course, the decision is centralized, but you get to get the access of a lot of information. So there are both ways, in my opinion. So when I see in 2015-16, when we were using funds for our company, we also used angel rounds. And there, typically, the first round of investing was happening in the startup is as an angel investing. Nowadays, there are several micro VC funds. Like there are hundreds of micro VC funds exist in the market. Hundreds, yes. So it's a very competitive market. Looks okay. Competition. So there are a lot of funds that have emerged in the last 3-4 years. And they are actually writing smaller checks in the companies from 100K to 500K US dollars. So वो जो फर्स्ट इन्वेस्टिंग हो रही है स्टार्टअप्स के अंदर, क्वालिटी स्टार्टअप्स, क्वालिटी फाउंडर्स, जस्ट अ सेकंड, 100K to 500K US dollars. मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ के चेक साइज टिपिकली. सो मतलब 1 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ये माइक्रो वीसीज, कई माइक्रो वीसीज अब 10 करोड़ तक के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट देयर आर 3-4 माइक्रो वीसी जो 1-2 करोड़ डाल के 4-5 करोड़ का फर्स्ट सीड राउंड कंपनी के अंदर कर देते हैं. तो यूजुअली जो फाउंडर है, स्मार्ट फाउंडर्स हैं या रिपीट फाउंडर्स हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, वो सीधा इन्हीं माइक्रो वीसी से कैपिटल उठा लेती है, वो प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट नहीं करती. देयर आर सेवरल रीजंस. ये प्री सीड कंपनीज होती हैं, पब्लिक नहीं करना चाहती अपने डेटा को, अपने प्लान्स को, एंड दे रेज क्लोज डोर इन्वेस्टमेंट. Once when the opportunity for angel investors comes open is when there is a bridge round required before Series A. तो कंपनी desired path पे नहीं पहुंची, थोड़ा बीच में bridge round की जरूरत है. That is when they want to knock doors of angel platforms. तो typically already 50 to 100% valuation अब आपकी हो जाती है by that bridge round, and if you are doing angel investing तो आप उस profit को lose कर पाते हो, already कर चुके होते हो. So that is where all the investor, and even if I look at myself, why we started warm up is that we always wanted that angel flavor in the capital to go, but we also wanted to have a decent check size so that we can enter in the first round of the company. So this is the fundamental reason that okay, we realized we raised from founders, but we started investing into companies. तो यहाँ जो माइक्रो वीसीज या क्यों एक इन्वेस्टर को पहले वीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, is because this is something like public markets. आपको अपना खुद का डेली ट्रेड करोगे या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने के कंपैरिजन में, इफ यू डू SIP और इफ यू डू इन्वेस्टमेंट इनटू अ म्यूचुअल फंड, दैट इज मोर रिलायबल, एंड देन डेटा आल्सो सेज दैट वी मेक अ गुड कंपाउंडिंग रिटर्न्स. सो समथिंग सिमिलर कंपेयर्ड टू स्टॉक मार्केट, देयर इज अ लेसर डेटा अवेलेबल इनटू प्राइवेट मार्केट्स. यू विल बी एबल टू कंपेयर लेसर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. आपको एक डील देखेंगे, आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे फाउंडर है, यू डोंट नो व्हाट द कंपनीज आर डूइंग इन अदर फाउंडर्स आर डूइंग इन द सिमिलर सेक्टर. तो वो सारी इंफॉर्मेशन वीसीज के पास आ जाती है. एक वीसी टिपिकली 100 से 500 कंपनीज मंथली इवैल्यूएट कर रहा होता है टू मेक अ वन इन्वेस्टमेंट, while an angel investor would look 3-4 companies to make one investment. So you can compare that what kind of decision making will be happening. So that is why we recommend people to start investing with the fund, but we can sometimes give flexibility if company permits that okay, you can write additional checks in the companies which you like more. So जैसे मैं 25 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लगता है ये 2 कंपनी तो बहुत ही अच्छी हैं, या मैं उनको स्ट्रेटेजिक हेल्प भी कर सकता हूँ, and I want to write larger checks there. So sometimes if the company has an allocation, we provide access to our LPs and investors that okay to allow it. And most of the other VCs have also started giving that out. Yes, to be really honest, मैंने एक वेंचर फंड में इन्वेस्ट किया था 2017 के अंदर. तो and the fund has done reasonably well. And in the early days, वो 2017, 18, 19 तक जब तक उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा था ना, तो एडटेक के अंदर वो लोग कुछ कर रहे होते थे, तो वो लोग पूछ लेते थे कि यू नो मतलब गाइस, देवर यार दोस्तों का ही फंड था, जान पहचान हो, भाई हांडा इसको एक बार देख ले कि एडटेक के अंदर कितना सही है कितना नहीं है. बट फिर जब अब तो भाई उनका पहला फंड सक्सेस हो गया, अब भाई साहब दूसरा फंड रेज कर रहे हैं, तो अब तो बड़े आदमी हो गए, तो अब कोई भाव नहीं देता है. बट आई डू अग्री ऑन the why I'm saying this is I agree on the point that as an investor you also get to learn a lot. So as an investor in that particular fund, they connected me because they wanted my expertise in edtech, and I also got to learn a lot about कि भैया edtech की दुनिया में मेरे को तो सिर्फ अपनी कंपनी का पता है या मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पता रहता है. करेक्ट. एडटेक भी इतना बड़ा स्पेस है, एज यू वुड नो, कि तुमको हवा ही नहीं है भैया कि दूसरे डोमेन के अंदर क्या चल रहा है. दैट्स वेयर इट डज हेल्प. करेक्ट. आई थिंक शरद, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि भाई पूरी मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, साउंड्स कन्विंसिंग इनफ. दारू तो तुम मेरी पी रहा है, तो कोई ब्राइबरी का यहाँ नहीं है, बट मान ले मेरे को तेरे फंड में पैसा डाला है, ये मैंने अपना मोड बना लिया,
क्या करूं मैं? What do I do? मैं जाके ट्विटर पे तेरे को डायरेक्ट मैसेज करूं? अब मैं तो तुमको जानता हूं, but not everyone watching does. So if someone wants to put money in your existing fund, what can he do? How should he approach you? How does it work? So I think in a fund like us, usually partners are doing the fundraising task only. So one can reach out to us on LinkedIn. We're very responsive. Most VC partners are responsive on the VC fund. Early stage VC partners at least, they're responsive. So anyone who wants to invest into warm-up, they can reach out to me or my partners in the fund. They can go to the LinkedIn page of warm-up. राजेंद्र का नाम ले दे भाई, ऐसे क्यों उस बेचारे का साइडलाइन करना? So I have two partners, Rajendra and Yogesh. So किसी से भी आप reach out कर सकते हो LinkedIn पे. If you don't find them, तो आपको सबसे सिंपल है warm-up ventures पे जाओ, वहाँ पे लोग देखो, people who are working there. You can find Sharad, Rajendra, Yogesh. Any of them you can reach out, and then they will connect you with over email, and then you can set up a short call to understand all the legalities, terms, what process, and then our team will reach out to you for. So other processes are like other steps are like getting your KYC done, getting agreements done, and then getting everything process planned. But ideally, you should have a call with a partner to reach out there. And does it cost anything? तुमको suppose when I'm investing, there will be a cost of setting up, etc. and fees. Correct. But do you guys charge money to tell people about this, how it works, or this introductory call is free, etc.? Yeah, it's completely free. There is no charge on pitching. हाँ, तुम लोगों को तो पैसा मिल रहा है, तो क्यों charge करें? Fair. My next question to you is: suppose I have a startup and I want to raise money from warm-up ventures. Yeah. What do I do in that case? So there are a couple of ways. One is that you can go to the website warmupventures.com and you can fill a form there and you can fill basic details and our team will get in touch with you very soon. Second is that you can write to an email, pitch@warmupventures.com. You write an email and we typically look at every deal which comes to us and who are relevant, who are shortlisted criteria, we respond then. If you follow, we will also respond. And third way is then you can reach out to any of the partners or team members of warm-up on LinkedIn, and there also you will share the same email ID and ask you to share it. That can happen in sometimes personal reference, it can happen on WhatsApp also, but these are the three ways which are ideal for us. Okay. So let's say as an investor, you said कि 25 लाख के आसपास का तुम्हारा विजन होना चाहिए with 10 lakhs a year or 5 lakhs every 6 months. As a startup, if I'm coming to you, what should my expectation be? Will I get 5 lakh rupees? Will I get 5 crore rupees? Correct. What's so warm-up ventures typically from the fund one is investing 50 lakhs to 1.5 crore rupees in the companies, and we look at companies who are raising somewhere minimum at around 3 crore rupees. So 3 crores to 10 crores are the sweet spot where we want to participate as a co-investor. We're sector focused, so sector agnostic, so any of the sectors you're working with, but technology oriented tech first company is something that we are looking at to invest. यार ये तो तुमको मैं बता रहा हूँ, तुम काम अपना जो है ना, एंड नॉट जस्ट यू, जितने वो ये स्टार्टअप वगैरह वाले कई बार इनकी इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा हम 1 करोड़ कर रहे हैं, 3 करोड़ कर रहे हैं, कई बार इनकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है 100 करोड़ डॉलर, 500 करोड़ डॉलर, यूनिट्स चेंज हो जाती है ना. तो someone like me, I have sort of made up a model की 1 million is 8 करोड़ और उससे हम मल्टीप्लाई करके जैसे 10 million तो 80 करोड़, 100K to 80 lakhs, तो वो मैं कर लेता हूँ. But it becomes very difficult, and so if there are any VCs, analysts, or anyone from the startup space watching this, bhai log, please, sincere request, either you keep everything in millions of dollars or whatever unit, or you keep it in lakhs and crores. दोनों mixed करके complicated हो जाता है because sometimes companies are raising from Indian companies and Indian funds and US funds. That is where this everything gets mixed. But I agree your point. So in the rupees terms, हम लोग 50 लाख से 1 से 1.5 करोड़ तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं. Companies when they are raising let's say 3 crores to 10 crores kind of round as a co-investor. And valuations typically we prefer कि less than 70-80 crores की valuations है. Fair. Then comes the next question. ये तुम्हारा जो मॉडल है पैसा कमाने का, मैनेजमेंट फी चार्ज करो, कैरी चार्ज करो, दिस इज साउंड शो शेडी. नहीं, हमको ये करना है, मेरे को अपना माइक्रो वीसी फंड चालू करना है, तो उसके लिए क्या मेरे पास भी स्किल सेट या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और क्या इसका प्रोसेस रहता है, मतलब मैं सेबी के पास में जाऊं या मैं किसी और के पास में, हाउ डू आई स्टार्ट a micro VC fund? See, is some simple the least way I will tell you. So one is that the background comes is like most VC funds are run by either the people who are coming from the investment banking or financial background,
or recently in India emerging like as like founders coming up with their own fund. So if you understand any of the verticals, expertise in the vertical, technology, finance, startups, operations, आपको वो समझ में आता है तो आप इस वर्ड में आ सकते हो. There are a couple of ways. Some people work into VC funds and then get into running their own funds, or some people do their startups and then come into running their own funds. So आपके पास तो दोनों ही, आपके पास पहला व्यापार होता ही है. मेरे पास स्टार्टअप वाला एक्सपीरियंस, स्टार्टअप वाला कंपनी चलाई है, अब मैं क्या करूं? Correct. And second, you have done a lot of investment also yourself, so you also understand investing side a little bit of that. तो आप दोनों चीजें कर सकते हो. इसको स्टार्ट करने का तरीका होता है किसी भी फर्स्ट टाइम फंड मैनेजर के लिए कि आप पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के फंड्स को मैनेज करने का कोशिश करो, या फिर किसी HNIs को whom they trust your opinion. तो जैसे हमारे केस में भी होता तो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स थे, मेरा पार्टनर राजेंद्र ही है सर, ये इन्वेस्टर ही हैड डिप्लॉयड देयर 20 crore rupees into some startups as advising them. मैंने भी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट किए, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के किए. जब आप वो करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस एंड एक्सपोजर समझ में आएगा. अभी आप मान लो 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करते हो, 4 लोगों के इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को होंगे. तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. Once you have done that in 5-6 companies, 10 companies, then you will think of getting either your own license from SEBI or reaching out to a licensed fund to become a partner, or to have an arrangement with them that okay, we want to use your fund as a service to invest. So both of them are possible, but your question कि यार start कैसे करना है, तो start ऐसे करना है अपने friends, family और कुछ HNIs के पैसे को मैनेज करना चालू करो एज एन एंजल इन्वेस्टर. हाँ, तो मतलब पहले अपने इमीडिएट नेटवर्क के अंदर देख के पता तो लगे भाई तुमको कोई पैसा दे भी रहा है या नहीं दे रहा है. भाई अभी एग्जैक्टली हाँ अभी जो तो है आप चले गए 100 करोड़ रेज करने और आपको 10 ही नहीं मिल रहे, तो दैट डजंट मेक सेंस. बट आप ये कर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर आगे के सॉर्ट अपने आप हो जाएंगे, मतलब आगे के तरीके अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे. Now I believe it would be good to have the perspective as an individual कि एक VC typically पैसे के बारे में क्या सोचता है, कैसे इन्वेस्ट करता है and all of that. And before that, what is your typical day like in the VC world? Okay, I'll answer the second question first. So my day is like, I have like every day I'm speaking to 3 to 4 startup founders, new startup founders. So we usually schedule intro calls of 30 minutes with them. That is my day going in. My 3 to 4 meetings are happening with either the founders whom we are exploring further, or some other VC funds to share knowledge. Maybe 2 or 3 times in a day I'm meeting to a get together and understanding what the ecosystem is doing. And my first half of the day usually this is all I do in the second half of the day. And my first half of the day goes in my own research, my own market understanding, my own thesis. So that is where I like to invest my time. That is my personal time of the first half. And then again थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है based on the people's availability. नहीं, that is how. बाकी VC लोग के साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन खुल के शेयर करते हो, aren't they on competition? So they are in competition, but early stage investing की सबसे अच्छी चीज, खूबसूरत बात यह है कि they are collaborative. क्योंकि हर VC फंड का चेक साइज कितना है, 1 करोड़ 2 करोड़ का, माइक्रो VC फंड्स का. तो माइक्रो VC फंड्स में काफी अच्छा कोलैबोरेशन है, because companies are typically raising 5 crores, 10 crores. So micro VC funds usually collaborate. Competition है कि किसके साथ collaborate करना है, किस डील में, this is the crack. So यहाँ रिलेशनशिप, यहाँ इंटेलेक्ट, हाउ मच यू आर सपोर्टिंग योर पोर्टफोलियो कंपनीज, कहाँ आपकी ज्यादा एक्सपर्टीज है, कहाँ आपकी कम एक्सपर्टीज है, ये सारी चीजें पिक्चर में आती हैं. कितना कनेक्टेड आप हो ऑलरेडी, तो ये चीजें आती हैं. लेकिन अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग इज मोर कोलैबोरेटिव. कंपटीशन इज आल्सो कोलैबोरेटिव देयर. अब नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम आंसर लिख रहे हो और कॉपी अपनी छुपा लोगे कि क्या हो रहा है जो 8वीं में होगा. अब ये है कि एक आंसर दिखा देते हो, दूसरा नहीं दिखाते हो. हाँ, मतलब कुछ तो तुम बातें अपने छुपा के ये करते हैं. दैट इज द ट्रेड, दैट इज व्हाट यू आर चार्जिंग फॉर. My next question to you would be, how do you manage your money? शारद बंसल का अगर आज की डेट में 100 रुपया है तो वो कहाँ कितना लगा हुआ है? So I will share, but I will not recommend anyone to follow my approach. So from my wealth, like 20% of that will be going into liquid money of, say, mutual funds or stocks or FDs, you can say. And rest 80% is going into startups. So what I'm advising here to everyone is like 20% of the startup. But myself, that is the trade. That's what I'm doing. 80%. That's why I understand. See, people in 90s who were expert of stock market, their entire 100% was going into stock market. They were not investing into real estate. They were not investing into somewhere else. But I am like, I understand this. You want some liquidity. That's why I've done some little bit into FDs and markets. But otherwise,
I see value into startups and that's where I'm investing. I never recommend it and that's why you're नहीं I fully understand. No one would recommend 80% in startups. मेरे को तो सुन के ही जो है ना मेरा PP 5 पॉइंट जो है वो ऊपर हो गया है. But I think I ourselves and my partners ourselves have been founders themselves. तो वो risk appetite हमारी अलग level है. तो उसको आप ये भी है. ऐसा एक बार जब जेब में आ जाते ना तो लोगों की risk appetite बढ़ जाती. तो 80% of your money is invested into startups. I'm assuming some of it would be going into your own warm-up ventures fund as well. So how much goes in there? Are there any legal requirements that you need to put money in that fund? Yeah, so basically warm-up ventures is currently not having their own license. So as such हमारे ऊपर कोई legal requirement नहीं है. But we have among the partners, fund managers, we have invested about 15% of total. So 20 करोड़ का फंड है तो करीब 3.5 करोड़ हम लोग इस फंड में डालते हैं. बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट 2 to 5% की होती है. एंजल फंड में 2% एंड VC फंड पे ऑलमोस्ट अबाउट 5% स्पॉन्सर्स का इन्वेस्टमेंट होता है. स्पॉन्सर इज फ्रॉम द फंड मैनेजर. दैट इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज. ओके. और इसका कोई मिनिमम साइज होता है क्या? मान ले मेरे को एंजल फंड चालू करना है सही वाला. अब वो पैसा रेज होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट क्या मैं 5 करोड़ का भी एंजल फंड चालू कर सकता हूँ या मेरे को नहीं कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए तभी आपको लाइसेंस मिलेगा? सो बेसिकली VC फंड्स का मैं बताता हूँ आपको. तो VC फंड आप जितना भी फंड करते हो तो उसमें से आपको 20% का आपको फर्स्ट क्लोज करना होता है और कुछ 20 करोड़ का ही आपका मिनिमम अलोकेशन होना चाहिए. तो 20 करोड़ इज द मिनिमम साइज वेयर यू कैन स्टार्ट विथ एंड देन यू कैन गो एनीवेयर अपवर्ड. फेयर. अब 20 करोड़ तो बहुत. अच्छा एक बात और बता. तुम वार्म अप वेंचर्स के थ्रू किसी फंड के अंदर पैसा डाल. तुम रवि हांडा की कंपनी के अंदर वार्म अप वेंचर्स के थ्रू पैसा डाल रहा है. रवि हांडा की कंपनी के अंदर तुम एज एन इंडिविजुअल भी पैसा डाल रहा है. यू डू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स एज वेल और यू डोंट? I used to do. Now I'm not doing. अच्छा you used to do. But it's not something legally restricted. I might do. So I think I get your question. So what happens is कि वार्म अप वेंचर्स से अपनी एक थीसिस है अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग की. तो अगर कोई ऐसी डील आ गई जो कि वार्म अप वेंचर्स की थीसिस में फिट नहीं बैठता है या तीनों पार्टनर से एग्री नहीं होता है but still I like personally, then I might invest individually. But my fiduciary duty is that I first bring the deal if it is fitting in the thesis of our ventures and all let's take a call on that. अच्छा तो लीगल कोई मेरी कंपनी के अंदर तुम इंडिविजुअली भी पैसा डाल सकता है, वार्म अप वेंचर्स भी डाल सकता है और दोनों भी डाल सकता है. लीगल होता है. सो व्हेन अब जैसे लेट्स अज्यूम दैट वी हैव आवर ओन लाइसेंस, देन सेबी की रिक्वायरमेंट लाइसेंस फंड पे अप्लाई होती है. तो लाइसेंस फंड में होता है दैट if the fund manager is themselves having an exposure in the company already and then they're investing from the fund, that is having a lot of complication from SEBI. अच्छा. You have to do disclosures and all. तो मत करो ना बेसिकली. मतलब नहीं टेक्निकली करना भी नहीं चाहिए. सो दो चीजें हैं. एक आपकी कंपनी है, पोर्टफोलियो कंपनी है पर्सनल एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द फंड. दैट इज रॉन्ग. बट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू कंपनी वेयर फंड इज नॉट इन्वेस्टिंग. दैट इज डिफरेंट. बट अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में कहीं इन्वेस्ट कर दिया फिर आप फंड से डाल रहे हो तो दैट इज देयर. हां मैं वही बोल रहा हूं ना. दैट इज व्हाट माय कॉन्फ्लिक्ट. मान ले मैंने एक कंपनी के अंदर पैसा डाला परमिट दैट $5 million वैल्यूएशन और अब मैं उसको अपने फंड से $10 million के वैल्यूएशन पे पैसा रेज करवा दूं. सो SEBI has a very restrict. So SEBI has a particular in each and every deal we have to give the disclosure that we do have an existing exposure in the company or not. Whenever you are investing through a SEBI registered fund, you have to give that disclosure. And typically, it's not a accepted practice that okay, fund managers are having already an exposure in that company. Understood. तो let's say ये जो अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात आई, एज एन इन्वेस्टर कैन आई टेक अ कॉल ऑन कि अच्छा हाँ नहीं यार ये कंपनी अच्छी है इसमें पैसा डालना है, ये कंपनी अच्छी नहीं है इसमें पैसा मेरे को नहीं डालना है. डू आई एज एन इन्वेस्टर हैव दैट राइट कि मैंने तुमको जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आई हैव नो राइट टू टेल हिम कि भैया तुम ये कंपनी खरीदो या मत खरीदो. यहाँ पे क्या मेरे पास में राइट्स होते हैं एज एन इन्वेस्टर या मेरे पास में राइट्स नहीं होते हैं? एंजल नेटवर्क्स में होते हैं. एंजल नेटवर्क में आप खुद करें, लेकिन अगर आप किसी VC फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो VC फंड डू नॉट वर्क दैट वे. VC funds is like the every LP's money is going into every deal, so there is no right tax such. Okay. इंडिविजुअल तो हाँ वो तो रहेगा ही ना यार कि भैया VC funds cannot operate. So basically क्या होता है एंजल नेटवर्क में आप देखोगे कि 1000 एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं नेटवर्क के मेंबर हैं. अब आपको हर डील में क्या चाहिए? हमने मिनिमम 3 लाख का कर दिया और अगर आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो आपको कितने इन्वेस्टर चाहिए? 30-35 चाहिए. लेकिन VC फंड में कितने इन्वेस्टर होते हैं? 100-200 इन्वेस्टर होते हैं, ओवर कमिटेड इन्वेस्टर्स. अब उनमें भी अगर 2-3
30-35 लोग कमिट चूज करेंगे, तो फिर वो सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एलोकेशन में, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो वीसी फंड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर. तो पहला स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट तुमको याद है कब किया था, कहाँ किया था फर्स्ट वन? नॉट विद द फंड, आई एम श्योर इंडिविजुअली भी तुमने पहले जो किए हैं, do you remember which one was the first one? So 2018 में किया था, and then again I had no knowledge of investing into startups and all, so we did that investment into an accelerator कि हमें मार्केट समझना है. So that was a knowledge investment more than a financial investment. वहाँ से समझ में आया कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है, कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट होता है. फिर एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैंने पर्सनल किया, विच इज लाइक अ वेरी अर्ली, लाइक थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज होता है यार. They were creating a game and then we started gaming application बना रहे हैं. Good founders, we invested, but that did not work out. Then I started doing mature investing and then see that how and what stages of कहाँ पैसा बनता है, कहाँ नहीं बनता है, all those things have happened. But मेरा पहला investing was more about knowledge investing more than financial. Financially, it has on paper it has grown more than 20 times, but I don't know where the exit will come. Okay. In your opinion, what has been your best investment till date and your worst investment till date? So I'll tell that from the point of view of money. पैसा के हिसाब से बेस्ट कौन सा रहा है? लर्निंग का तो यार बहुत इंटेंजिबल रहता है. करेक्ट. पैसा के हिसाब से बेस्ट कौन सा रहा जिसमें जो भी रिटर्न आया, नाउ you can account for liquidity in that, you can account for just valuation growth in that. So Ravi, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है ये दिस इज द कंट्रोल व्हिच डजंट कम फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर्स. जहाँ एग्जिट मिल रहा होता है वहाँ कोई लेता नहीं है. जहाँ कंपनीज ने 5x शुरू कर दिया और वो बोलेंगे कि ठीक है एग्जिट ले लीजिए, then no investor will agree to take an exit as an angel investor. And जहाँ उनको पैसे नहीं बच रहे होते, there everyone wants to take money, and that is the challenge in the when you see the public markets also, and that is happen in the private market. VC फंड में थोड़ा सा डिफरेंट डिसिप्लिन फॉलो हो जाता है, उनको अपने स्टेज फॉलो करनी है. लेकिन हाँ, मतलब couple of investments from the partners of Mamba Ventures is like we did an investment in a company called Voice Labs, it's a Jaipur-based company into waste management. They invested when the company was 20 crore rupees of valuation. Now the company is valued about 200 crore. Popular party हुआ है हम लोग का. So that is one of the companies that have done. Then my partners have invested in a company called Bank Saathi. Again, they invested when Bank Saathi वाला. करेक्ट. सब तो मतलब लोकल राजस्थान का ही. That is the USP. So initial investments are happening from your close networks, like where you are connected, where you are not connected. फिर so Yogesh, my third partner, he has done about 70 or 80 odd investments. So he has been more frequent investor. He has covered investment. He is invested into Keto at like when it was about 10 or 20 million valuation. Now it's almost 400 million valuation. So there are some success stories. Out of those 70-80, you can say about 5 or 6 are like multi baggers. But he's yet to take cash exits out of them. Out of I think 7-8 he has taken cash exits also. We started investing. I personally started investing in 2018-19. तो भी वहाँ से cash exits नहीं आते. But someone who would have started investing into 2015 तो वहाँ से they're getting good exits. भाई मेरा भी जो है ना, I think 2015 वाले में एग्जिट आया है, 17 वाले में एग्जिट आया, 17 के बाद वाले में अभी तक जो है कोई एग्जिट आया नहीं. उम्मीद है 6 साल का तो कम से कम gestation period आप मान ही लो. फिर आप और ये होता है ना कि when you are getting, so Tinkerly के अंदर if I talk about my whole startup, when investors were getting exits at about 5x of the valuation, 5x of what they've invested, तो जिसने 5 लाख इन्वेस्ट किए तो उसको कोई 22-23 लाख मिल रहा था. उसमें भी लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था कि एग्जिट ले लो. So that is what happens is when the exit is coming, you should take it or you should not take it. That's an art which we have learned with our own first-hand experience. And you have seen unicorn startups going down as well. So every fund brings that discipline कि कब invest करना है और कब exit लेना है. And when there are personal motives comes in, then the emotional investing happens to start, and then the losses starts to happen. So this discipline is something that is essential. Fair, absolutely. मैं जो फंड का बता रहा, so I've invested in, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारे, हम जिंदगी में एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हूँ. दूसरा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने 6 फरवरी को डेट साइन किया है, अभी तो पैसा भेजा नहीं हूँ. 30 तारीख आ जाएगा. तो जो पहला वाला फंड था, उन लोगों ने क्या किया, जब मार्केट अच्छा चल रहा था 2021-22 के आसपास, तो उन्होंने बोला भैया ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल, ये रहा तुम्हारा हर्डल, और 2021 में उन्होंने प्रिंसिपल प्लस हर्डल वाला पैसा निकाल के वापस दे दिया कि तुम ये रखो.
अब जो उसका पार्टनर है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, पुरानी जान पहचान है, इसीलिए उस पर पैसा डाला था। बोला कि हांडा अब तो मुझसे वापस बात नहीं करना, क्योंकि अब जो भी है वो अपसाइड है, प्रिंसिपल और हर्डल मैंने लौटा दिया है। अब मैं अपसाइड को इसे ओरिजिनल हम लोगों की जो बातचीत हुई थी, which was on paper as well, that it will be a 7, 8, 9 year fund थी, 7 साल बाद वापस देगा और 8 या 9 तक वो जा सकता है। करेक्ट। 5 साल में ही भाई साहब ने प्रिंसिपल और हर्डल जो है वापस कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक 9 साल नहीं हो जाता है तब तक हम पूरा डिसीजन मेकिंग जो है अब मेरे पास में है, कि मेरे को तुम फोन भी नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं कि भैया कहाँ तुम बेच रहे हो, क्योंकि अब जो भी बिकेगा, एंड ऑन पेपर इट इज डूइंग रियली रियली वेल, कि अब जो भी बिकेगा उसमें से 20% मेरा है। तो नाउ मतलब नाउ आई विल डिसाइड theoretically on paper, on by rules, it is always he was supposed to decide. Correct. But उसका पॉइंट ये था यार, मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा पहला फंड है, यार दोस्तों ने पैसा डाला है। Absolutely. अभी मेरे को एग्जिट 2021 अच्छा टाइम भी था, Perfect. मेरे को एग्जिट वगैरह मिल रही है, तो मैं तुम लोगों का प्रिंसिपल और हर्डल लौटा देना चाहता हूँ, ताकि तुमको बाद में ये नहीं हो कि भैया पैसा डूब गया। प्रिंसिपल हर्डल वापस आ गया, कम से कम ये हो कि पैसा मेरा सेफली पूरा वापस आ गया। Absolutely. जो परफॉर्मेंस वाली पार्ट है, अब देखते हैं भाई साहब क्या करेंगे। तो 2021 में तो बहुत बुलिश थे, अभी भी मेरी से बात होती रहती है, उम्मीद तो है। हाँ, so markets keep happening, like ups and downs happening. 2021-22 की जिसने एग्जिट लिए, they were the golden time. Raising capital in 2021-22 was very very easy. And then the early investors were getting exits. This is the time 23-24. This is the time for investing, not for cashing out. यहाँ पे founders have come to the genuine valuations. Supply is there. Not so many investors are investing, so you will not have a very FOMO competition. You are missing out on deals. So this is the golden type of investing. There will be a time which will come then when you will be able to reap in your benefits and profits. But abhi, this is the time where it's not the exit time, this is the investing time. Rising. Fair. तो बेस्ट के बारे में तो तुमने बता दिया, वो अपना वॉइस वाला हो गया, या बैंक साथी नाम है, बैंक साथी हो गया। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है तुम्हारा, जिसमें तुम मतलब साथ पकड़ के बैठ गया, अरे यार ये तो मतलब ऑब्वियसली भैया गलती हो गई, बाद में समझ में आया कि यार ये तो हुआ था जब मैंने मेरा पहला इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसी फाउंडर की एक फ्रेंड की कंपनी थी, व्हिच इज अनदर कंपनी वेयर वी इन्वेस्टेड, एंड दे बोथ वर पिचिंग टुगेदर, और हमको ये था कि थोड़ा लोकेशन दोनों में आते, दैट वाज इमोशनल इन्वेस्टिंग। ना हम उस दिन माइंडसेट से गए थे कि हमें इन्वेस्ट करना है, ना हमने सोचा था, बट वी इन्वेस्टेड बिकॉज दे वर फ्रेंड्स एंड वी वर थिंकिंग लाइक लेट्स इन्वेस्ट टुगेदर एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल। So when you do that emotional investing, you overlook the potential benefits, financial outcomes, and then you end up investing, which will not become anything. Second failed investment was that the investment into college student, but I would not say that is the worst investment. That was a good learning. Sometimes good companies come out of that, like OYO was one of the examples. It come from a dropout or a college student. But that is something I learned, that I have to have a discipline, that I have a basic hygiene checklist, that I invest at what stage, not at like anything and everything which looks exciting. So that is one of the learning that I got. फाउंडर फ्रॉड भी तो मतलब एटलीस्ट आजकल तो यार बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर फाउंडर फ्रॉड का इशू आने लग गया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि छोटे लेवल पे फाउंडर फ्रॉड की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है या कम रहती है, मतलब इज दिस एन इशू की यार ये आदमी ही बेईमान है। अब तुमने देख लिया कि अच्छा हाँ क्रेडेंशियल्स है, पीपीटी अच्छी है, ऑल ऑफ दैट, बट इज फाउंडर इंटेग्रिटी एन इशू, एंड हाउ डू यू टैकल दैट कि पैसा जब तक नहीं है ना तब तक आदमी का जो बिहेवियर है वो है। और ये मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, पैसा आ गया उसके बाद में बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। सो एंड to be honest, I have not seen that happen with seed stage founders that much, but I've seen that happen with Series A and Series B founders, that once you get $10 million in the bank, things change. तो अर्ली स्टेज के अंदर भी तुमको ये फाउंडर इंटेग्रिटी या ये सारे इश्यूज कहीं फेस करने पड़े हैं, और हाउ डू यू अकाउंट फॉर दैट? I mean, we try to take the best possible kind of market feedback. People who worked with them in their previous companies, people who worked with them in their colleges. I think that is where the feedback happens to happen. कि यार वहाँ से थोड़ा idea लग जाता है founders की integrity and any other value system also. Second, आप उसको ये भी check करते हो कि जो fund raise हो रहा है वो कितना genuine हो रहा है. How much genuinely this company needs versus how much the founder is planning to raise. If you can evaluate that properly, then also you can understand that, okay,
there is a possibility of a potential fraud or siphoning is there. So sometimes in the bull market, what happens is that everyone is so excited about the company that they want to take a bet of the company. Company needs 5 million, they end up raising 10 million. And then the founder is under pressure to deploy the 10 million and they start taking out other. Some exceptional founders, a very small fraction. But that happens when there is an excess capital coming in. If no one gets excess capital, they will not have any chance to think of doing something. उनका पूरा पैसा उधर ही लगेगा जहाँ जरूरत है. तो जैसे ही इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, थिंग्स स्टार्ट टू स्पॉइल देयर. बट एज अ माइक्रो वीसी फंड हमारे हाथ में कंट्रोल में भी नहीं है. अगर कोई सीरीज बी इन्वेस्टर आके एक्सेस पंप इन कर देता है, बट दैट इज द फ्लैग फॉर अस दैट दिस इज द टाइम फॉर अस टू टेक एग्जिट. तुम लोग को मौका मिलता है क्या? सो जब एक्सेस कैपिटल आता है तब मिलता है. तो जब सीरीज बी में भी मिल सकता है, वो सीरीज सी में भी मिल सकता है. व्हेन द कंपनी नीड्स 5 मिलियन बट देयर आर इन्वेस्टर हु आर रेडी टू गिव यू 8 मिलियन, तो वो 3 मिलियन 2 मिलियन वो सेकेंडरीज में कर लेता है. So that is the time when you have to decide. Now you have to stick to your thesis that okay, I am not a Series B investor to continue forever. I should take either partial or full exit at this stage. तो वो फंड मैनेजर का रियल टेस्ट होता है that when you are getting the taking the exit. Taking the correct. हाँ, मतलब because he needs to evaluate कि if I continue invested in this, आगे इसका कितना क्या future है. Investing का real test is about selling, not about buying. I think ये एकदम कोटेबल कोट है कि इन्वेस्टिंग का रियल टैलेंट इज क्या दोबारा बोला इसका रील बना के डालेंगे. So I think the real test of investing is about selling, not about buying. Must. So I think on that note, let's wrap up this particular episode. Thanks a lot, Sharad. Thanks for coming to the show. I hope we will be able to do this again sometime soon. Thank you so much, Ravi. I think thank you so much for the beer as well. यार ये थोड़ा सा वो हो गया. तो मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग और भी एपिसोड्स करेंगे ये बियर पे बकर के. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.